Now, preparations are underway in the city of Kashi ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit. After being sworn in as the Prime Minister for the third consecutive term, Prime Minister Narendra Modi is all set to visit the holy city of Varanasi for the first time since the election results were announced. On day one, Prime Minister is scheduled to hold an interaction with the farmers and also participate in the Ganga Aarti at the ancient Kashi Vishwanath temple. Prime Minister will also be releasing the 17th installment amounting to more than 20,000 crore rupees to around 10 crore beneficiary farmers under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Prime Minister will also give certificates to more than 30,000 women from the self-help groups. होने वाला है पीएम साहब का, किस तरह का पूजन अर्चन कराएंगे आप लोग? पीएम साहब जहाँ भी जाते हैं, जो भी प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उनमें सहभाग करते हैं, उनमें दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में तो कोई भी उनकी यात्रा ऐसी नहीं हो जो यहाँ पर ना आए हो। आज लगभग 10 वर्षों में, ठीक से संख्या में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हर 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने पर आते रहे हैं। तो हम लोग सीधे काशी विश्वनाथ जी का जो परंपरागत रूप से दर्शन होता है, पूजन और दर्शन दोनों साथ साथ होता है, उसमें 1650 से जो शास्त्रीय विधि है उस 1650 से हम लोग पूजन उनका प्रधानमंत्री जी का कराएंगे। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है पीएम साहब का? ऐसे तो वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार पहली बार विजय हासिल होने के बाद आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 18 तारीख को सायंकाल में होना है, जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार। और जैसा हम प्रत्येक ड्रिल में होता है, एक से ड्रिल है मंदिर में आगमन की, कि आगमन होने के बाद यहाँ पर हम लोग उनको अलाइट करेंगे। कार से उतरने के बाद वो डमरू वादन के साथ उनका अभिवादन किया जाता है। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करते समय शंख ध्वनि अथवा मंत्रोच्चार के साथ उनका हम स्वागत करते हैं। और अंदर मंदिर में जो गर्भगृह में पूजा होती है, षोडशोपचार साधना जो की जाती है, उसको संपन्न करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री का प्रस्थान होता है। My colleague Piyush is now joining me on the story. Piyush, as a tribute to the people of Varanasi, Prime Minister all set to meet the farmers and even the women in the city. Well, certainly, Aishwarya, that is going to be the first visit of Prime Minister Narendra Modi after becoming the Prime Minister for third time. Remember that it's his home constituency also, and this time also he has been able to secure a victory with a huge margin. Prime Minister will be not only visiting there but also will be releasing amount for more than 9 crore for the farmers of country. But we are given to understand that more than 20,000 crore amount will be released for the farmers. That is going to benefit around 10 crore farmers across the country. But we are also learning is that it will be the first event of PM Narendra Modi along with the Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, where they are going to talk about Kisan Samman Nidhi. At the same time, few schemes for the welfare of women will also be launched. Prime Minister Modi will be taking part in Ganga Aarti tomorrow in the morning at around 9:45 a.m. He will also pay darshan at the Kashi Vishwanath corridor. So after this program, he will also fly to Bihar. So he is scheduled to visit Bihar tomorrow. So it's a 2-day schedule of PM Narendra Modi, where he is also to travel to not only his home constituency but also to the state of Bihar. Thank you, Piyush, for giving us all those details. Not just Varanasi, but also going to Bihar is what's Prime Minister's plan for the day.